I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't we find a single reason not to say goodbye? Oh, if I said what's on my mind, would you stay with me tonight? If I said what's on my mind, would that make you run and hide? Run and hide. Run and hide. If I said what's on my mind, would that make you run and hide? Would that make you run and hide? Run and hide. Run and hide. Oh, would that make you run and hide? Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't we find a single reason not to say goodbye? I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my... Yo, what's up guys? Welcome back to another live stream of कैसे हो आप सब लोग? I don't know मेरी ऑडियो ठीक से जा रही है कि नहीं? मेरा माइक का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अपना जो फंक्शन वाला जो चीज़ है उसको मैंने बंद किया। ऊपर से मेरे आईडी पे मेरे डीएम में कुछ शाउट जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कभी भी कागवा वाला क्वेस्ट ओपन ही नहीं किया था। सबसे गंदी आदत जो है खोल के रखना। I don't know सबको नोटिस किया होगा कि नहीं। Let's check. Hey there! We'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant.
Millions? Of Mora? Spams. Whoa! Oh, wait, even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person targeted, someone is certain to have been hurt by now. मेरा voice slow आ रहा है क्या फिर से? यार क्या उल्टा सीधा चीजें होता रहता है यार. The in-game sound is more. In-game वाला sound कम कर रहा है. अब ठीक है. ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. ठीक है. अब ठीक आ रही है? मेरी ऑडियो मतलब आ रही है कि नहीं? मैंने मेरा ऑडियो सबसे ज्यादा रखा, डेस्कटॉप ऑडियो सबसे कम. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right, then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma? Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to थोड़ा me. म्यूजिक का ऑडियो कम I करना neither- पड़ेगा. Sure, बहुत ज्यादा can't hurt. आ रहा है. We never know what we might find out along the way. Thank Are you, you gonna Ryuji. stream it any today? We'll start by Or making some शायद inquiries से at the Amenoma Smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly मेरा myself. main तो audience section का ही है. वरना चैनल ठप पड़ जाएगा ठप. हाँ, जो करने वाला था बहुत ऑडियो बहुत ज्यादा है यार, म्यूजिक बहुत ज्यादा है. हाँ, 4 is enough. Sounds good. अरे म्यूजिक अच्छा है लेकिन मेरा कान में दिक्कत हो रहा है. ज्यादा म्यूजिक वो भी बात करते टाइम में it's not good. Injurious to health. If it isn't Kaedehara Kazuha, what brings you here today?
Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Nice. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryou Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryou Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts. Truth be told, based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. Yes. From the sound of that, Paimon
doesn't think Yuya was the one अरे who ये attacked काजू us है as well. अरे इनको पता नहीं काजू है काजू ये बहुत अच्छा एक पोएट है जो मस्त मस्त गाने लिखता है मस्त गाने नहीं लिखता एक्चुअली वो बार्ड्स लिखता है जो वेंटी है ये एक्चुअली काजू है तो ये पोएम लिखता है लेकिन वो अगर उसके अंदर म्यूजिक ऐड कर दोगे तो वो एक सॉन्ग ही हो जाएगा Yes. Full It of sounds coughing as if fits. something happened when the two men met each other. क्या तन्वा भैया Let's हंस pay रहे a हैं visit to the Nagato household. एरन ईगर कौन है भाई अरे यार ब्लूम किसने ऑन करके रखा है सारे सेटिंग्स उधर कर दिया यार एक नंबर का Okay. Unrelenting patience, willpower to move mountains. किसको पाएगा F2 दबानी सी हमें मिलेगा इधर कौन ऑनलाइन है मेरे फ्रेंड्स डूड किंग येरन ईगर ये है कौन बाय द वे ये है कौन तक तो नहीं है Are you bro you play I go okay thanks for joining Snowbell and Erika sorry I'm a subscriber oh okay मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ ना मुझे याद आ जाएगा सॉरी रियली सॉरी मैं 300 साल बाद आ रहा हूँ एक्चुअली साल आने के बाद मेरे दिमाग का भाजीपाला हो गया भाजीपाला क्या करना है बोलो तो do you want any help kiddo कंटेंट दो फिर मैं उसके बदले में कुछ तो दूंगा I don't know जैसे भी ये चाहिए कि कंटेंट दे दो तो अभी करना क्या है वो तो बताओ लाइक मैं तो जा रहा ये करने का मिशन कंटेंट दो बदले में हम तुम्हें क्या देंगे मजे करवाएंगे और एरन भैया आपके पास यूआईडी है या फिर चाहिए प्लान वैन है बताओ या ये एरन भैया कहाँ है Where are you भैया नहीं पेड़ के ऊपर नहीं के भैया नहीं दीदी ओह सॉरी हेलो कन्नत मैम वेलकम
स्ट्रीम 300 साल के बाद। थैंक्स फॉर कमिंग। ये होता है जब आप 300 साल तक स्ट्रीम नहीं करते। लेकिन आप गए कहाँ वो तो बताओ। सब भूल गए यार, कितना गधा हो गया हूँ मैं। 300 साल के बाद, 1 eternity later। मेरी एग्जाम्स थी ब्रो। मैं खुद की बात कर रहा था, वो लाइक 300 साल बाद आने की, वो मैं मेरी बात कर रहा था कि मैं 300 साल बाद आ रहा हूँ। इंटरनेट प्रॉब्लम्स। ओके ओके, कोई बात नहीं, मेरा भी होता है। और यहाँ एरिका ने, हाँ एरिका है अभी, स्नोबेल नहीं है, वो तो काम कर रहा है दिन रात। पता है मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है क्योंकि अभी 3 दिन तक माइक प्रॉब्लम हो रहा था मेरा टट्टी वाला। हाँ धोखाधड़ी बोलते हैं इसको। वही एरिका। मैं हर जगह YouTube पे देखे जा रहा हूँ, सब यूएमए ले रहे हैं। लाइक भाई तुम लोग यूएमए के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, मतलब क्राइम अवतार मस्त है आपका क्यों बोल रहे हो? थैंक्स बाय द वे, आपका मत बोलो, मेरे को बूढ़े दादू की फीलिंग आती है। प्लीज, ये क्या है? ओ मैंने नहीं ली यूएमए। हाँ ज्यादातर लोग नहीं लेते। मेरे को अगर ये मेरे पास पहले से यूएमए नहीं होती ना, मैं फिर भी नहीं लेता कि आई हेट यूएमए सीरियसली। ये कौन कुत्ता भाग रहा है? ए इससे आगे नहीं जाएगा यार, क्या टट्टी है। आया का 300 साल बाद के बाद मैं फाइटिंग करने वाला हूँ। It didn't count. To the fairy. मैं उसके लिए विश नहीं करूँगी। हाँ मतलब देंगे बहुत, मतलब टाइटल में दे रहे हैं। बोलते व्यूज आपने के चाहिए बाबू बेटा। मैं भी नहीं कर रही हूँ बार्गेन। Ring cutter. Here come the fireworks. हाँ वही ना, वैसे नाम रख के आता है। स्नोबेल, I agree with you। मेरे को पहले लगा कि कोई नया बॉय हो, कुछ थी, मैंने बोला ओ। हाँ फिर दिन बार्गेन भी प्रीमो से ये मेरे का वो चाहिए चाइल्ड के लिए मुझे, फिर तो पैसा ही पैसा है बाबू भैया। बोलते पैसा ही पैसा है मेरे पास। ये सब मेरे को चाहिए भी नहीं था, मेरे पास ऑटोमेटिकली आया था। फिर एक स्ट्रीम में लोग बोल रहे कि भाई तेरे पास तो लाइक स्काईवर्ड हार्ट उसके साथ यही भी आया, तो ये यूज क्यों नहीं करता? उस टाइम मैं गधा था, मैं अभी भी हूँ, वो अलग, वो बात अलग है। लेकिन उस टाइम पे अलग टाइप का गधा था मैं, अभी अलग टाइप का। ये क्या है? मत दिखाओ स्काईवर्ड हार्ट। My blade. मेरे को अभी एक मीम याद आया, जली ना, वो वाला मीम। क्या हो रहा है?
नहीं मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ ओ वाह क्राइम्स क्या 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 ओपी भाई बंदा है तू, क्या बंदा है भाई तू तो। इधर से मैं सीधा बोर्ड बिल्कुल लैंड के ऊपर से उड़ाते उड़ाते ले जाता। एक तू सप्लाईज का है, सप्लाई कहाँ रखा है, कहाँ रखा है यार ये सब सप्लाई। एक और सप्लाई इधर है ना। ओके ओके एक ले लिया। और ये मैं गेम को आया का डांस प्लेस, यस ये इधर आया का नाचती है। वाइपर वेलकम टू द स्ट्रीम। भाग 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 क्राइम्स मरेगा, कुछ मौत मरेगा, वो भी हिली चार्ज से। अभी तो बॉस फाइट करने पे हाथ कांपते हैं ऐसे ऐसे थर 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 करके। प्रैक्टिस लगेगा भाई 300 साल आने के बाद। वाइपर, यस वाइपर का नाम है वाइपर, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है जब उनको वाइपर करके बुलाया जाता है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मतलब मैं सोल वाइपर की बात कर रहा हूँ, तो वाइपर जी ऑफेंड मत हो जाना। ऑफेंड इनको पता नहीं सोल वाइपर है तो गूगल जाके सर्च कर लो यार। A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. हेलो कोनिचिवा, मेरा कोनिचिवा ही लगाना चाहिए। कंप्यूटर चैलेंज बाय तो इसके लिए तो मुझे स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल। ये पार्टी सेटअप का कौन सा शॉर्टकट की है, कोई बता सकता है मुझे क्या? प्लीज बता दो यार। क्या 100 पॉइंट्स, बाप रे एक्यूरेट पॉइंट्स बोल। ओ स्नोबेल, ओ अरे क्या कर रहे हो? नाइट बॉट को मैंने स्पैम प्रोटेक्शन ऑफ करके रखा है उसका, अभी ऑन कर दिया तो एल लगा देगा। एल का मतलब वो मुझसे कि क्या है? क्योंकि वो मैं बता नहीं सकता, वो ऐसी चीजें जो बताई नहीं जाती सबको समझ में आता है, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा। 3 हो गया, एक और ओपोनेंट से। अरे विश है मेरा विश है विश एक्सक्लेमेशन विश, गैम्बल नहीं है। सबको याद दिलाना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है लेकिन पढ़ेगा कोई नहीं। सब छुपा के रखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, लेकिन दिखाता कोई नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो कैसे छुपता है ये मुझे भी जानना है। अच्छा बताओ करना क्या है, बताओ। सारे कमीशन भी कर लिए, कोई कुछ किसी को देखना पसंद नहीं है। और जिनको पता नहीं मैं अभी क्या खा रहा हूँ, तो ये है गुआवा। इसका मीनिंग नहीं पता तो गूगल कर लो, वो भाई सबको पता है। I
100 इनको पता नहीं है गुआवा का मतलब। Wherever in this world. फिर केजी में जाके पढ़ लो। गोल्डन एप्पल एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर ओके। फिश का क्या? मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? Have you ever Golden kept apple goldfish as apple. pets? They're very cute. ओह दांत टूट गए यार मेरे। दांत ही तोड़ दिए मैंने। रुको I want आया का बैग। अरे भाई क्वेस्ट। ओह चंद्रशेखर पंडारे वेलकम टू द स्ट्रीम। ये मैंने अभी क्या किया? 18 days left IG. Okay. Hello legendary gamers, welcome to the stream. Oh यो वो पे नहीं हो सकता। Need disband. Oh. सब अपने सब कुछ विश कर रहे हैं। रिडीम्स तो कर लो यार। रिडीम्स को छोड़ दो यार। If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Places and various spaces between them. ये हो क्या रहा है? मैं फंस गया। मैं डिसबैंड क्यों नहीं कर पा रहा? इनका ने कोई तो ग्लिच किया। ये हैकर है पक्का। एक्सक्लेमेशन मेन्यू। अरे मेन्यू नहीं है। लेजेंडरी गेमर्स भैया नीचे है डिस्क्रिप्शन में सब डाल दिया अभी। और ये हो क्या रहा है? मैं क्यों नहीं कर पा रहा ये डिसबैंड? बाय बाय। अरे नहीं बाय बाय की कोई ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसके लिए मैं कर रहा डिसबैंड। एप्पल के लिए तो हुआ है भाई। ये भी क्विट कर देता हूँ। बाहर में है। अब फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ। बहुत तेज हो रहा है। क्या मोमेंट पे मीम आया भाई? शाबाश। क्या मोमेंट पे मीम आया? थैंक्स लेजेंडरी गेमर्स। हवा नहीं खाया जा रहा मेरे से। Anya, haha, let's put this on me, see? सुबह 6 बजे मैं आज तक नहीं उठा। और इधर मैं जेंशन के अंदर 6 बजे उठने की कोशिश। वो भी 43 पे उठ रहा हूँ। सोचो ये सबके पास कितने पॉइंट्स हैं? Some is Wake up! Traveler, wake up! I ठीक है don't एक तो want लाइक to- और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का Goodness, you're दबा के right. लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। And bad news. Which अरे one do you थोड़ा want to hear first? वेट करते हो जाता। टेलीपोर्ट हो रहा था इसलिए डिसबैंडेड नहीं हो रहा था। ओ तो ये अरे यार मुझे वही मेरे को लगा कुछ ग्लिच विच हो गया है मेरे गेम के साथ। Okay, Paimon, sorry. Wake up, something's happened. क्या हुआ? बर्बाद करना बंद करेगी कब? Okay, bad news first. The bad news is something weird's going on with this island. बाय बाय लेजेंडरी गेमर्स भैया। Goodbye. And the good news is, गुड न्यूज़ इज क्या? it seems like it has nothing to do with what we came across yesterday. Today is a different issue entirely. मतलब गुड न्यूज़ है ही नहीं, बैड न्यूज़ है। Ah, look, he's awake. हेलो टोबी, वेलकम टू द Careful स्ट्रीम। not to frighten him. He's probably just like the others. Humans. Such delicate ये little गिलहरी things. बात कर। How are you doing, mate? Feeling a little fragile?
the boat can talk. I might just go back to sleep for a bit. Nice. No, आज avoidance मैं isn't चेंज है gonna solve देख anything. लेना हाँ देखा है मैंने हमने किया है मस्त Poor soul. Imagine being scared of talking squirrels and boats. Well, we can't blame him. After all, humans aren't quite accustomed to hearing things like us talk. Wait, have you guys always been able to talk? Of course. Otherwise, how would we communicate with others of our kind? So in other words, we suddenly gained the ability to understand you? Huh. How strange. Maybe you've gained some intelligence. Congratulations. So you're finally awake. Time to rise and shine. Oh, you're back. Yes, we went for a little walk. The enchanting scenery and pleasant weather here soothes the body and mind. ठीक है ये सीनरी कहाँ से है हर जगह तो समुद्र Everything है is fine, पत्थर है except that some places are a little peculiar. Oh, the servants of darkness have descended. Rejoice, for the return of the Emanach is nigh. Mein Fräulein means that this is an unexpected development, and she has never seen anything like this before. No, that's not even close to what she said. Oh, my apologies. Please take that as my own opinion. After last night, there have been some unusual spectacles on this island. हाँ सब बात कर रहे हैं Swimming birds, flying squirrels, the sun and moon in the sky together. Some of these sights अरे only बहुत lasted पेन for a है moment, इस but that doesn't make it any less bizarre. ये I heard a ass strange twist का flapping मतलब sound on the island, but didn't see a single flying creature around. There was also a peculiar floral scent on the मैंने ground. पहले भी golden Though there apple are many पहले flowers कभी on नहीं this किया island, मैंने that सिर्फ उनका scent वीडियो did not देखा resemble any of them. Seems to me like whatever. I tried to चलो perform a थोड़ा skip कर लेते हैं इसमें भी होना पड़ोगे Wait, you don't think Alice could be behind all this, do you? But if it really was... Look at them, old chap. Seems we scared the pants off them. Aye, well, they've never seen anything like this before. This old boat sailed all over the briny seas in its time, and tried talking to many a sailor too. But in all that... Exactly. If it weren't for this environment, who would have thought humans would be able to chat with us? ठीक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए The environment. Could it be that the environment is what's interfering with my divinations? I'm still Even dreaming if you were... Dreams aren't supposed to become reality, right? And a dream won't make you suddenly understand boats and squirrels. What's wrong? Look! Over there! क्या है इसको की तरह क्यों लग रहा है ये एक्सेंट ऐसा क्यों लगा कि An हम कोई illusion. विजन देख रहे हैं No, it felt too real to be an illusion. Those things we saw flickering in and out. That's exactly what I saw earlier this morning. Does this mean the Emanach is real? Wait, what? मैंने क्रैश किया है Oh, behold! The Emanach has come, just as your Prinzessin had prophesied. Come, my people, a new chapter awaits us. Indeed, mein Fräulein. We all have witnessed this miracle with our own eyes. And now is the time to celebrate the creation of a new world. Rejoice. Welcome to the Emanach.
She looks so happy. Paimon doesn't have the heart to interrupt her right now. Oh, she doesn't seem surprised in the slightest. Does that just come with being an experienced adventurer, or...? If this isn't an illusion, we ought to go and investigate. I got an idea. If you hurt yourself in a dream, you wake up right away, don't you? Yeah. Right? So, but that'll hurt real bad. Hey! यार ये बोर हो रहा है यार. Just leave it to us! Hey Traveler, can Paimon hit you? What? I like your senses of humor, me hearties. An illusion. So, talking boats and squirrels are just an illusion to humans, huh? Now. Aye, so that... Well then. Of course! चलो skip करते हैं इसको और आगे चलते हैं. Don't you have a name? That I do. In that case... Mitoboru, you're lucky to have come aboard. Ah, how very kind of you, old chap. Unlike that Animo Archon who abandoned us here. क्या? You know, the Animo Archon of Mondstadt. Don't you know, some of these islands used to be Mondstadt's mountaintops. Once upon a time, the Animo Archon sliced them off to neaten the place up and chucked them into the ocean. वाह My मोदी जी वाह. great-grandfather was on one of the mountaintops and got sent flying here along with it. Wretched Animo Archon. How इसको could गाली that पड़ रही है. happen? बेटी को गाली And we've been living here for generations since then. Fortunately, there were a few other squirrel families that got stranded on these islands as well, so we built ourselves a kingdom here. The good thing is that there are no predators or competitors around. All the pine cones on this island are ours for the taking. The bad thing is, we're stuck here. Didn't see that coming. Sounds like the Immernachtreich is a kingdom of squirrels. Hold thy tongue! Paimon, please do not make such slanderous statements. The Immernachtreich is, of course, a kingdom of night ravens. Hey, lad. Yes, you. You're from Inazuma, aye? That makes us brothers, ha! Every young lad of Inazuma has to pluck up the courage to set sail on an adventure one day. So, are you coming? Yes. To set sail is to leave one's homeland and travel far away. Aye. You... My friends, are you coming too? Also, Oz, late. Let's all go. Safe travel. स्टार्ट हुआ अभी अभी स्टार्ट हुआ यार. ये गंदा क्वेश्चन मैं बाद में करूँ. मैं ऑफ स्ट्रीम कर लूँगा यार ये सब चीजें. ये सारी चीजें मैं ऑफ स्ट्रीम कर लूँगा यार. मैं ऐसी चीजें इधर नहीं करती यार. आधे घंटे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा. ऊपर से मजा भी नहीं आता. बोर हो जाता ना. मेनली बोर ही तो हो जाता हूँ. उसके अलावा क्या है? और हेल्थ बढ़ा ले. पाली को के लिए अच्छा करे क्या? बताओ क्या करे तो करे क्या? सोचे क्या? बोले तो बोले क्या? ना हुआ. ये ब्लेज मैंने नहीं लगाया है. इसको मतलब बिना नहीं लगाया. शाफ्ट ऑफ रिमेम्बरेंस ठीक है. 3 डैमेज वाला. हाँ ये भी मैंने नहीं लगाया. ये दोनों चीजें की है इन्होंने. टीएमजी बराबर. ये क्या था? डैमेज
जो डीएमडी हो गया। तो मैंने देखे क्या रहेगा था इंट्रेंडिंग ब्लू मो, तो इन्होंने दिया है इसको। ये मस्त है भाई, ये तो इन्होंने मस्त दे दिया यार। भी बना लेता हूँ। मैं तो सब कुछ फीड कर रहा हूँ इसको इतना पावरफुल बना लूंगा जिससे किसी ने भी सोची ना होगी। विश का टाइम गैप क्या सेट किया है? टाइम गैप तो कुछ नहीं है उतना। टाइम मतलब वर्ल्ड का 120 एंड अगर वो पर्टिकुलर बंदा फिर से करना चाहता है तो उसका 60 मतलब 1 मिनट और इसका 2 मिनट। विश तो कोई भी कर सकता है ना, इसके लिए कम सेट करके रखना। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? रुकी भैया गेम में आ जाओ, फिर ये कर लेंगे और कुछ ग्राइंड वाइंड कर लेंगे। और आना चाहता हूँ, अभी तो मुझे बोर हो रहा है बहुत। गिरा है क्या? सैड लाइफ भैया। एक शॉट, वन शॉट डेड। सही है यार, गया मैं। मस्त मक्खन। मैं तो सोच रहा थी ये इंडिया को थोड़ा सा और अपग्रेड कर लूं। मैं 90 कर ही लूं, सोच तो रहा हूँ, लेकिन होगा क्या 90? हाँ एसेंट तो कर सकते हैं, तो क्या है? मुझे डीलू का क्लॉथ खरीदना है यार, वो वाला रेड टेट्रॉन। तो लड़की बना दिया यार डीलू को तो उन लोगों ने। ये ठीक है, देखो ये ठीक है। ये तो सीधा लड़की लग रही है यार, इधर से तो बिल्कुल लड़की लग रही है। सैड लाइफ डीलू क्या इधर मुझे तो कुछ तो लिखा है हाँ ये करते हैं फैंटम ऑफ द पास्ट। ये भगवान ये नहीं कर सकता। एसेंट करना है क्या? नहीं एसेंट नहीं करना। क्या करें? डोमेन कर लेते हैं ना, कोई डोमेन करता है। चलो चाइल्ड बुली लेट्स गो। चाइल्ड बुली करते हैं। चाइल्ड को बुली करेंगे। रुको मैं चेंज कर रहा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं हेल्थ हील करके आता हूँ, वरना बेमौत बेनेट मारा जाएगा। बेनेट गंदी मौत मरेगा इस वजह से। कौन जिंदा नहीं लगता? सारे
मेरी 50-75 हो गए। अरे मस्त। अभी विश मत करो। नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर आने वाला है? सुमेरु का? तो सुमेरु का आएगा तो अच्छा है भाई, कुछ फुल कर लेना। मेरे को मालूम नहीं, आई गेस ये आने वाली है, कोले आने वाली है। कोई रिचुअल पता है तो बताओ। 50-50 करना है मुझे। फुल किसके लिए करने वाला हूँ बाय द वे? आई डोंट नो, मेरे को रिचुअल पता होता तो मैं आज नोवेल बन के बैठा हूँ। मुझे खुद रिचुअल सुनना है, अब मुझसे रिचुअल मांग रहा हूँ। मेरे को पता नहीं भाई कैसा रिचुअल करना। रिचुअल के नाम पे मैं बहुत ज्यादा ही। If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. चलो स्टार्ट। This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be मुझे gentle. हारना है। हारना क्यों है? अरे नहीं, ऐसा कुछ मत करो। ये भगवान बचा लो, कल मारने आओगे क्या? बचा लो मुझे। Cowering already? अरे यार Fizzle out. Time for a light show. You've made some progress. Guess I should take you more seriously. डर लगता है यार इससे तो। No use hiding back there. Fire hazard. A festive reprise. Solidify. Teamwork is dreamwork. You've got some skills. यूएई में तो है। अरे यूएई में तो है, लेकिन मैं क्या करूँ? Let's light it up. नहीं, नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि नेक्स्ट जो इवेंट बैनर पे आएगा वो ले लेना। Time for a light show. Here come the fireworks. Order. ये भगवान। Brightly. कब होगा रिचार्ज? बूम बूम बकदान। इंडिपेंडेंट कर गया तो लगता है। तेल लग रहा है क्या? हो जा। ए भगवान, वेल। बच गया। Die here. Everybody stand back. Feel the slit. The festival ends. Let's light it up. You're cut above. Free damage. ठीक है। मिल गया। इसके बाद हमें जाना है एशडा के पास। एशडा जिससे हम गंदा पिटेंगे, लेकिन फिर भी हम तो है ही दूसरे, जाना तो है ही मुझे।
जाना तो पड़ेगा उसके पास, एजडा के पास जाना पड़ेगा क्योंकि यूएमिया का एक जो लेवल है वो एजडा देता है सबको। ये देखो एक टैलेंट जो है ये एजडा ही करवाएगा, ये देख लो। ओ नहीं जाने की जरूरत नहीं है। Oh, ow! Where did that come from? क्या नाम है ना उसका? हाँ, क्राफ्टिंग बेंच, अभी टेबल कुछ भी कह लो। And the kind of philosophers, ballad, resistance, freedom, brilliance, issue of the gold light. वो ट्रांसिस कहाँ है? ट्रांसाइंस या ट्रांसिस को भी कह लो उसको। एलिगेंस है, ये लाइट है, नहीं है क्या मेरे पास? Let me check one. इधर तो इधर ही होना चाहिए, बोल तो रहा है कि है। Prosperity, diligence, prosperity, ballad, resistance, freedom, ये वो है कहाँ यार? ये तो टट्टी है यार, ये तो टट्टी है यार। क्या है उधर? उधर तो होना चाहिए। हाँ ये नहीं है मेरे पास। सूड लाइफ क्या करना है अब? I don't know क्या करना है। एडवेंचरस गिल्ड। ओ मैं GTA नहीं खेल रहा, बताओ। उधर ही टेलीपोर्ट कर देगा। ओ मस्त। एक सेकंड रुको, ये साइन बोर्ड जलता था पहले? ये साइन बोर्ड पहले भी जलता था? मैं तो आज देख रहा है, पहले जलता नहीं था। नहीं जलता था यार, पहले नहीं जलता था, अभी नए अपडेट में डाला है शायद से। मैंने आज तक नहीं देखा जलता। कमीशंस, एक्सपेडिशन, रेप्यूटेशन वाले पे चल। यामिको का बस 4 हिट्स मारता है। अरे मस्त, 4 हिट्स मारता है, मतलब एक बार How relaxing. और मस्त। मेरे को यामिको को उतना पता नहीं है। हाँ अगर 4 हिट्स मारते इसका मतलब बाप रे। एक सेकंड में वो तो पूरा ढेर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कितना ही है उसके पास HP? ज्यादा है यार। मेरी यूएमए भी अगर ऐसे मारती तो आज धन्य एक से इनको तो इन्होंने डीलू को कुछ तो किया है। वीडियो है ओ फिर मेरे डिस्कॉर्ड पे डाल दो वीडियो, फ्लेक्स मस्त लगेगा। डालना चाहता मस्त मस्त फ्लेक्स। हाँ ये स्विच कर लेने को और स्विच
Let me check. Look, अरे skyward pride. हाँ वो तो याद है. कुछ तो कर रहे थे मेरे डील पे. मैं co-op लीव कर रहा हूँ. ओके ओके नो प्रॉब्लम. नहीं ये डटी है. अरे डीलू का ड्रेस लेते हैं. डीलू का ड्रेस लेंगे. डीलू का ड्रेस लेते हैं. टेम्पोररी मिलेगा या परमानेंट मिलेगा? आई डोंट नो. डीलू का ड्रेस परमानेंट मिलता है कि टेम्पोररी मिलता है? Phantom of the past. आया हाँ परमानेंट लेकिन F2P नहीं रहोगे सर. तो ये बस ओ वाह क्या 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 कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो यार. कितना मस्त है. मैं F2P की बात कर रहा था. तो ये क्वेस्ट क्यों लेके रखा है इन लोगों ने? दिखाएंगे कि क्यों है ये ड्रेस. The wine dinery क्या बोल रहे? मैं भी बोलने क्या वाला था. Wine dinery. वाह. The wine dinery. वीडियो कौन से सेक्शन में रहेगा? Genshin Flex. Good day to you both. It's been quite a long time. You're looking well as ever. Hi, Adelind. To what do we owe the honor today? Important business to discuss with Master Diluc, I presume? वो सिर्फ प्रीव्यू है. आउटफिट नहीं मिलेगी. मतलब धोखा है इसका मतलब राइट ना. एक सेकंड होल्ड ऑन. मैं एक चीज देख रहा. गेम ओवरले ऑन कर रहा मैं. रजिस्टर्ड गेम्स तो That's right. Adelind, since we've run into you, maybe we could just get you to help us with this one. Adelaide. We always miss the winery's discount grape juice, so this time we decided to come here early. Can you reserve a bottle for us? We'll pay a deposit. Just name the price. Of course I can, and no deposit necessary. But I'm afraid you might be in for quite a wait. Dawn Winery's discount grape juice takes a long time to make. Every summer, Master Diluc handpicks 2 barrels of the finest grapes to turn into juice. What? Why sell the good stuff at a low price? Shouldn't the best grapes be the most expensive? Master has never explained his reasoning. If I had to guess, the discount could be a marketing technique. Special deals always attract customers. Perhaps Master hopes to increase the popularity of fruit juice so that people have more options when it comes to drinking. It makes an ideal alternative for the heaviest drinkers because they won't get drunk and start causing mischief. At the same time, those who don't drink alcohol get the chance to try something new. Master Diluc isn't all about money. I think he would prefer to see people drinking in moderation than chase bigger profits at any cost. Imagine if everyone could just enjoy a nice glass of wine and have a good time while keeping their wits about them and not creating trouble for others. Now, wouldn't that be a miracle? Wow, Master Diluc's such a thoughtful guy. So, is Diluc picking out this year's grapes right now? Not just yet. He has a few more issues to sort out first. He'll start the process as soon as those are out of the way. If you're interested, I'm sure Master Diluc would be delighted to see you and hear your thoughts. एक से रुक जाओ तो ये मैंने तो ऑन करके रखा है यार ये गेम.
गेम ओवर वेरी क्यों नहीं आ रहा यार? नहीं इंसर्ट डिस्कॉर्ड देखो अब। हाँ देखा मैंने। अच्छा रुको, स्ट्रीम के ऊपर ही मैं As you know, whenever Master Diluc catches wind of any unsavory guests showing up in Mondstadt, he takes it upon himself to go and greet them in person. It's the same story today. He should be somewhere near Falcon Coast. I'm not sure how long he'll be. In the meantime, would you like to take a seat inside? I have to stay here and wait for some other guests, but Hilly and Mako will be glad to take care of you. Unsavory guests? What is that supposed to mean? Unsavory guests कुछ तो है भाई। अच्छा मतलब रोल्स ले लो जाके, ओके ना? रोल्स अगर आप करना चाहते हैं रोल्स। You mean the dark the dark and evil abyss order up to no good again? In that case, Master Diluc's our friend. We can't sit here and do nothing. If you're happy to help, that would be wonderful. Master trusts you after all, and you're both very capable. I know he'd appreciate a helping hand. No biggie. The sooner Master Diluc is free, the sooner we can get a taste of that delicious grape juice. Come on, let's go to the Falcon Coast. I guess PC restart करना पड़ेगा, गेम restart करना पड़ेगा। चलो Falcon Coast जाएंगे, उसके बाद प्रीव्यू मिलेगा हमें देखने। ओह, तो अब समझ में आया, वो ड्रेस स्पेशली सिर्फ डार्क नाइट के लिए है। मतलब अंडरस्टैंड, जिससे किसको पता ना चले कि यही मास्टर डीलुक का अपीयरेंस है, अगर शैडो भी दिखे तो। माइंड थे भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार प्लीज। 220 करवा दो यार, 3 साल से परेशान हो रहा हूँ। और ये मैं का सिंगल ही डैमेज सेट। Diluc is camping out in the wild? और ये का सिंगल ही डीएमजी में सेट किया है। ओके ओके। Maybe these enemies are really tough, and it's turned into a long, drawn-out battle. Huh. This tent doesn't look like it belongs to Diluc. ऐसा तो कोई कलर नहीं होता, ये मतलब ये लो मैंने। Oh, there's a piece of paper and a notebook over there. Let's read them. Dear Dark Knight hero, we're seeing a repeat of phenomenon here in Judging by the tone, it seems like this was written by someone Diluc knows well. Let's call him Diluc's friend for now. He saw something bad happen, wrote a note for Master Diluc, and then left. Huh. Isn't that pretty irresponsible? What if someone else had seen it? Also, he left his notebook behind. Now that Paimon thinks about it, you know that strange ley line deposit on the beach? हाँ, वो तो है। एक सेकंड। Other than that, everything seems fine here. Not a monster in sight. हाँ, ये Do you want to read Diluc's friend's notebook too? If not, let's head over and take a closer look at the ley line deposit. Tell me, कोई कपूर है इधर से इसके अंदर। Whoa! Where did all these monsters come from? Wait a second. Is that Diluc? Huh. He looks kind of different than usual. Look at him go! So focused and full of energy. So this is Captain Pyro when he's in top form, huh? अच्छा ले लो form from when he fought here in the past. Hey, you're right! Now that Paimon looks more closely, this Diluc does look younger than usual. But what happened back then? Why is he fighting here? Guess we can just ask him about it when we see him. What should we do now?
Okay, let's see how young Diluc used to fight. Tell me, अभी ये भागा मिल गया. तो मैं Diluc का भूल ही गया कि ऐसे Sankram FF, welcome to the stream. Bro, अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? The fight is over. Diluc wiped the floor with them. Guess some things haven't changed. So is there any actual danger here? It looks like it's only these illusions from the past. So Diluc's already called it a day? Will more monsters come out if we go up to that weird ley line deposit again? And what about young Diluc? If it's like the other ley line deposits we've seen, then it should have disappeared now that all the monsters are defeated. No! Paimon's just a little worried is all. What if someone passing by gets curious, comes to check it out, then suddenly, yeah! A monster jumps out and clubs him over the head with a swish and a smash! That would be terrible. पता है. Because it sounds more dangerous that way. ये तो पाइमोन डर रहे हैं. Anyway, ये फिर ये we came here to help बातें कर Diluc, didn't we? So let's stick around a little longer and make sure this place is completely safe before we head back. Not really. Paimon... Come on! काम खाना उसको है. काम ट्रैवलर करे. Difficulty. Start. Fire hazard! Written in the stars. Embrace the ice. Goldfish it down. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Fate is upon you. Fuse is lit. Here come the fireworks. तेरी तो मैं मारूं. ये इंसान है यार. Time for a light show. Starting to wonder if we should have left the ley line deposit alone. Maybe then the monsters would have stopped coming. हेलो डेरिक भैया, वेलकम टू द स्ट्रीम. कितने दिनों बाद. यार मैं ये जो क्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ तुम्हें उकसाने के लिए कि भाई हाँ भाई पैसा दो और Diluc का कॉस्ट्यूम दे दो. अगर ये का कॉस्ट्यूम मिलेगा तभी दूंगा, या फिर आका का मिलेगा कोई और से भी अच्छा वाला जिस पे आका बीच में घूमने गई हो. नो व्हाट आई मीन. गोल्डन आर्कापेलिगो. सारे कैरेक्टर्स का प्राइवेट पेज इस गोल्डन एप्पल आर्कापेलिगो. नेक्स्ट सीजन पे इसी टाइम पे कोई ऐसा फालतू अपडेट आएगा और ऐसे गोल्डन एप्पल आर्कापेलिगो का. You're finally back. I didn't think you'd be gone. That's okay. We did offer to help. So anyway... Sorry, I'm not sure of Master's whereabouts either. But I did hear that he recently visited Angel's chair.
After dealing with this kind of trouble, Master is always careful. He should be back very soon. After all that, we managed to completely miss him. Oh well. Let's just wait for him at the winery this time. By the way, Adeline, hopefully you haven't been... Oh, thanks. Certain guests may need... Master hopes that under... Well, I didn't understand any of that, but... That's very kind of you indeed. But you've already helped Master Diluc out a great deal. You can let me take care of... There are a few... Is this a letter for Master? Yes, it's... Ooh, that means... Of course. Master... रुको, let me check. Friend request and... बाप रे 58 लेवल के हो? मैं तो पिद्दी हूँ ये देखो 50. Enter the done my name and find the Diluc's desk. Now review करना है इसी वजह से दे रहे हो understand. High level flex incoming. एक से रुको ये मैं replace Amber. Okay so 29,000 max. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Okay. No wonder आपका best account है. Pyro DMG bonus 61%. Best account तो नहीं है मतलब हाँ अच्छा है मतलब top level के characters. मेरे से तो बढ़िया है. Crimson which of flames 4 pieces. C0. F2P confirmed guys. F2P confirmed. 9 okay. 15,000 HP, 1,990. 80k deficiency 741. More. 48% crit rate. Crit damage 400. मस्त. हम आयुमी. आर्टिफैक्ट्स के अंदर तो हाँ बस 4 piece wanderer मस्त. पता हाँ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार 220 कर दो और डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो नया डिस्कॉर्ड बनाओ ओके ना नया डिस्कॉर्ड है तो फिर से ज्वाइन करो. F2P नहीं है वेपन देखो बस बीपी पास वाला है उसका ऊपर. Got a point. मस्त ना ये मिस ही कर देता है यार. P2P confirmed. Talent balance ठीक ठाक है. ठीक गड़ा कमीशन तो आया खा. Okay. 16,000 max HP, 2,130 80k. Okay. 39.2 crit rate, 259.2% crit damage. A blade embraces its duty. As a jeweler cherished... Miss Flitter, अरे bye. अरे भाई रमी Miss Flitter लेके बैठे हो. Okay, Blizzard 4 piece and Constellation C2. You will 19,000 HP. Ready to go. क्या? कहाँ से आप? मतलब फिजिकल बिल्ड है. 64.9, 159.9 weapons. भाई एक से कितने हेवी वेट है यार. Snow term start silver okay. 2 piece pale flame 2 piece blood stain. यार मैं भी टोकला आया था यार. 887. Raiden shogun. ये मस्त. 51.3 crit rate, 182.9 crit damage. Crit बढ़िया दे.
Yes. Collateral damage bonus. Okay. The catch इधर है 4 piece served. Okay, no wonder. Red का weapon gives crit. Okay. 32%. अरे वाह. हाँ कैच है ना, कैच देती है. 10 and 10. मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि कैच ले लो. मैंने बोला कि मेरे पास कोई बोलना कैरेक्टर है ही नहीं भाई, है ही नहीं. मैं लेके करूँगा क्या, वही ना मुझे बताओ. मैं लेके करूँगा ही क्या यार. तो वही बता रहा ना, लेके करूँगा क्या मैं. देखो चंदा माँ भीख मांग रही है. कायदा हरा काजुआ. काजू बॉय. ये लो काजू बॉय, काजू खाऊंगा. हाँ 20,000 HP, 1,344 ATK. What? जो मैं देख रहा हूँ ये सच है? ये बिल्ड 50% एनिमो डैमेज. ओह ये बिल्ड नहीं है. काजुआ नीड्स EM. हाँ सिर्फ अभी तो लाइक ये नहीं है. हाँ वही मैंने देखा है ये. मतलब आप काजू की EM के लिए बिल्ड कर रहा हूँ. Bruh, this is against the rules. Sankonomiya kokomi. मस्त. ये क्या रही है? ये मैं जो देख रहा हूँ ये सच है. -95.0. हाँ वो बात अलग है कि हाँ मुझे पता है कि सांगोमी का माइनस में जाता है, लेकिन सच्ची 95.0 उसका तो उल्टा है भाई. माइनस पे करेक्ट कर दो. डीलू का कौन है आपका? नया सूट लाके दो इसको. आप तो P2P हो ना. नया सूट लाके दो उसको. चाहिए सरपेंट्स प्राइन. ओके 4 piece क्रिम्सन. मस्त. एंड 7 मस्त. अरे पता है भैया आप बहुत प्रो प्लेयर हो. आपका अकाउंट रिव्यू करने की भी जरूरत नहीं. आपका नाम, आपका लेवल देख के पता चलता है. सलाम रॉकी भाई. लेवल देख के पता चलता है यार. ये क्या हो रहा है? मेरे फोन को दौड़े पड़ रहा है. बच गया. नाम रॉकी भाई. ये क्या है? ये सब विश करते रहेंगे. So many letters here. It looks like Diluc read them just before you left. He must have been in a hurry. Adeline asked us to put this one at the top of the pile, but how are we supposed to tell the order of the other ones? Guess we'll have to read them to get an idea of when they came in. Oh, that's true. In that case, let's just tidy them up a little. You're here. You move fast. Woo! There he is! वो क्या किया मेरा शॉर्ट्स What थे are you भाई. agonizing over? ये बिल्कुल इंडियन सिनेमा की तरह था बिल्कुल. And we can't tell which order they should go in. But it's your personal mail, so it'd be rude for us to read them without your permission. There's no need to be nervous. And I can see from the looks on your faces that they've grabbed your interest. These letters deal with events that are past and gone. I only held on to them in case any of the information they contain proves useful later down the line. I just dug them out to confirm a few details. I've been following some rather unique developments recently. You were involved in the events in question anyway. You can read them if you want to. It's not a bad thing to be curious. इसका वॉइस बहुत मस्त है. लेकिन हाँ ये सस्ता जोंगी. मेन तो बेस्ट जोंगी का वॉइस. Hey, that's a good point.
Actually, you kind of smell like wild mountain fruit. Oh, did you go to those mountains where the valberries come from? Very perceptive. Yes, I did make a trip to the Stormbearer Mountains. I'll fill you in later. नहीं फिर हम नीचे क्यों गए थे उससे फैल्कन कोस्ट ये सब वो सब क्या हम धोखे से लेके गए थे We still have some super important things to discuss with Diluc. Not to mention a whole bunch of questions. All right, let's just sort these letters for him. Well, since he said he doesn't mind, why don't we read them as we go? चलो पढ़ते हैं उनके लेटर्स प्राइवेट लेटर्स पढ़ेंगे आज हम Not sure what this one's about. Shall we read another one? Do you want to keep reading them, or have you got the... Okay, remember... Alright then, let's put the letters in the right order. If there's one thing we can take away from these, it's that Master Diluc has had a pretty difficult past. Not only was he misunderstood by the Knights of Favonius, but he's faced all kinds of other obstacles too. Sounds like it's tough being Captain Pyro. Always fighting alone because, for one reason or another, it wasn't convenient for the people around him to help out. Yeah, that plus, he's got us now. We can give him all the help he could ever want. Oh, out of friendship, of course. Definitely not just for the grape juice. Wait, what? Is there a problem? Master Diluc, you're wearing your old outfit again? And you've tied your hair back. You look so formal all of a sudden. Old outfit? You've seen it before? Yup, it was by that ley line anomaly. That was your past self, right? Huh. I'm surprised it made such an impression. Do you mind telling us about it? What happened back then? Why were you fighting there? The same reason as ever. Just stopping another Abyss Order plot. They launched an offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, they were still no match for me. We were fighting in an area on Falcon Coast, and everything was recorded by the unusually active ley lines. They must have become unstable again recently, causing them to let out all kinds of information from that time. Hence why you saw what you saw.
guys, I'm back. For starters, you only need to deal with the monsters and the ley line deposit will stay dormant, as long as it isn't disturbed again. On the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of Favonius would have taken over straight away. Knowing how they work, they'd be sure to send a large contingent to guard the site. Wouldn't that have been a good thing? Depends. Most of the Knights are away on expeditions, so they don't have a lot of people to spare. If the ley line anomaly was just a diversion tactic, the Abyss Order could have been poised to attack somewhere else entirely, while the Knights were scrambling to send what limited forces they have to Falcon Coast. But anyway, I have no interest in talking to the Knights of Favonius. I prefer to get to the bottom of things myself, rather than waste time negotiating with them. And it was easy enough for me to find out the Abyss Order's plans. Take a few Abyss Mages hostage, and they soon start talking. As for the Knights of Favonius, I've sent someone to enlist their cooperation where it's needed. It's their job to handle. I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy. Whoa. Seems like you have even more control over things now than you used to, T-Luke. The best way to deal with any threat is to utilize all the force at your disposal. Anyway, thank you for your help. Adeline brought me up to speed with everything. In return, I have a gift for your trouble. Grape juice? The packaging is so fancy! It must be really expensive! This is my personal favorite grape juice, made of the highest quality grapes. I happen to have an unopened batch, so I brought you a bottle to try. I didn't know you were such fans of grape juice. Next time you want some, don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. It's on the house. Woohoo! Paimon's gonna tell everyone we meet that we're VIPs at Dawn Winery! This one bottle must be worth at least, like, 50,000 mora! And he gave it to us for free! Thank you so much, Master D-Luke! बोलता पैसा ही पैसा है जब If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. Adeline is already making it. There are, however, a few things I need to take care of before dinner time. Yes, passiveness is not my style. Though I had my suspicions at the start, everything I've come across so far since this arose from natural causes. So what should we do? Right! Sure! Wait, no. What was it? After all, even when the odds of success are 9 to 1, you must never lower your guard! Well said. In that case, let's get going. Okie dokie, Captain Pyro. You can take it a little easier this time. Come on, let's go! This is the final battle. Then we can हम ज़्यादा experienced हो गए, understand guys? हम ज़्यादा experienced हो गए. अभी हम टीलू के साथ not as mentor but as his friend बात कर सकते हैं. इन्होंने जाके हमने discipline मिल गया, मतलब सिखा दिया नजुमा ने बिल्कुल. हम बिल्कुल निचोड़ दिया mentor को. अब हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, सोचे तो सोचे क्या.
better. Decided by destiny. Kamisato art. Sumetsu. Fire hazard. Bye bye guys. Slow the ship down. Pull the dodge guys. Pull the dodge. Take flight. तेरी बहुत रे. भाई साहब इसको बोलते damage. There. It's done. The ley line deposit will disappear before long. All thanks to the power. See, even Sidekicks. It's been a long time since I last worked with others. It's not so bad. If the opportunity arises, let's team up again in the future. Subscribe किया है. Please chat पे लिख दो यार. I subscribe, please. पता तो चलेगा. इतने अच्छे इंसान जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और वो बात लगी कि हाँ अगर आप एनोनिमस हैकर हो तो अच्छा ये आपकी मर्जी. Ad Astra. Thank you for completing today's commission. Ad Astra. Dispatcher, and the dispatcher. DUA Mars. खाने को मस्त है क्या? हाँ ये है खाने को मस्त. शेल गोल्डन भेजता हूँ मैं. हाँ सिर्फ खाना करता रहेगा तो खाना ही मिलेगा ना बस. सारा जीवन तो खाना पड़ता रहता है यार. रात को केक पका के खाऊंगा. थोड़ा माइनिंग करने भी भेज देते हैं यार वरना तो और कुछ बनाना पड़ेगा तो क्या ही करेंगे ना. कचिंग को भेज देते. कचिंग का ooh 60 primos. अरे मस्त भाई. मैंने देखा नहीं. अरे कितने दिन का बना ये? 16 दिन अभी तक. अभी आया है क्या? इसका मतलब ये तो इसका मतलब अभी आया है. It's 37 and ये लेके 38. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. कोई मस्त है. सुबह अपडेट तक तो इतने विश कर ही लूंगा जिससे मेरी 70 तक 50 तक तो पिटी पहुंच ही जाएगी. 50 तक तो पहुंच ही जाएगी. बाकी क्या बाहर में 50 तक तो पहुंच ही जाएगी यार. कौन है? चेक कौन है. कोई ऑनलाइन नहीं है. सब ऑफलाइन. एक लास्ट को एक करके मैं जा रहा हूँ. मन नहीं कर रहा है ना. मन तो कर रहा है लेकिन मैं घूमने जाऊंगा तो दोस्त के साथ तो नहीं अभी. बस कौन ओके टॉक टू पाइमॉन लिस्ट अनवील. बच्चा क्या है मेरे पास अभी और बच्चा क्या है? चलो कुछ तो बच्चा होना चाहिए. अरे नहीं एक काम करता था मैं नहीं जेंशिन ट्रेलर देख लेते हैं एक दो.
इसके अलावा तो कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है करने का। launcher.exe, what's launcher.exe? Oh, launcher.exe, understand. नहीं मेरी वीडियो देखो। हाँ, अच्छा याद दिला दिया, वेरी नाइस, थैंक यू। ये भगवान का है। ये चैट में थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा क्योंकि ये बहुत उल्टा सीधा काम कर रहा है। देख पाए पे ना कि ये है देखना तो एक से अरे रुक जा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये देखो, ये है 81,000, 3,000, 10,000। बाप रे भाई साहब मस्त मस्त। इतना डैमेज तो हम सपने में देखते हैं कि भाई इतना डैमेज जिंदगी के अंदर होना चाहिए। आपके पास बारिश हो रही थी क्या उस टाइम पे? कितना? ये 1 लाख कितना? हाँ ये तो ये 1 लाख हुआ क्या? ये मैंने अभी जो देखा ये 1 लाख था। लो 1 लाख बोल उड़ी मस्त भाई। 1 लाख डैमेज जिंदगी में नहीं होता। ये यही वाला ना, जिंदगी में मेरा भी ऐसा डैमेज होता ना तो जिंदगी मस्त मस्त हो जाती है। इसमें सिर्फ 2 क्रिट हुए। हाँ इसमें 2 क्रिट हुए मुश्किल, लेकिन है ये जो 4 क्रिट रेट थे, ये जो 2 होते हैं मतलब इक्वली है एक्चुअली बोल सकते हैं। ये दोनों 1 लाख के थे और ऊपर वाले ऑलमोस्ट 3 लाख के थे, या फिर 2 लाख भी हो सकता है, नॉट श्योर। वो 1 लाख के कम के थे, ये एक सिंगल 1 लाख से ज्यादा है या। अभी देखते हैं तब मैं एक स्ट्रीम है ना। नहीं तो मैं ये स्ट्रीम तो बाद में वो देख के भी कितने के चैनल पे चले जाऊंगा देखना है। मैं लेके क्या करूं? GENSHIN इम्पैक्ट मेन ये ऑफिशियल मैंने सुमेरु का सेकंड वाला ये टीजर हर बार देख लिया क्या? ओ ये नहीं देखा हमने। I often travel during storms, which means my eyes are often blinded by the rain. Many times, I couldn't even see what was right in front of me. One day, I finally reached the top of the mountain. I looked out with the clouds beneath my feet and only the gentle breeze murmuring in my ears. The highest mountain is a clear and enlightened heart. Here, there is no self, no hatred, no regrets, and no desires. Let's embark on a journey, for I am the breeze. We will meet again, no matter how far along the road. Life has just begun, and maybe the whole world can be my home.
to you who lived here in the past. I hope you liked this song. One stormy night, a girl found a way to the future in the library. ये official वाली story है. She said to herself, I shall create my dream kingdom. I'll carve mountains and oceans and erect castles and towns. Then she spoke to those who shared her dream. Please be proud of all that is unreal, for we are greater than this world. For our magnificent kingdom is a small and forbidden paradise. पटुई का देखते हैं प्रैक्टिक का. पटुई देख के रखा है एक्चुअली मैंने. ये देखो आपको कहाँ पे पटुई कहाँ पे है? पटुई और पटुई का है पटुई. हाँ दर्द होता है ये सब करने में. दर्द होता है पता है. मेरी तो फटाफट मिल गई पटुई. ये देखा है मस्त है. ये सबसे बेस्ट था. ये देख के ऐसा लगा था कि हाँ जेंशिन वापस फिर से है. यही होप दिया मुझे कि हाँ फिर से जेंशिन की स्ट्रीम कर ले क्राइम्स. ये मस्त है. ये है ओरिजिनल जेंशिन जो नॉस्टैल्जिया फिर वो जो चिलिंग वाइब्स देता है. ये है. The sages think themselves to be all-knowing, but we alone are wise to the virtue in those acts of folly. In this war, not even a single pawn may be spared. Because on this chessboard, checkmate is not where the game ends. We are gathered here today to remember our dear comrade. In honor of her sacrifice, all work should halt for half a day as the nation mourns her passing. Merely half a day? People say the Northland Bank's true currencies are blood and tears. But Mayor, even speaking as a banker, that sounds a little unconscionable. Rosaline died in a foreign land. But you heartless businessmen and dignitaries always with a convenient excuse to remain in the comfort of your homeland. You couldn't hope to understand. So why don't you keep your mouths shut? We don't want to make the children cry. Hey, come on now. Even I don't think this is the right time or place for a fight. Utterly risible. Though her methods tarnished her honor, Loafalta's sacrifice is a great pity. Her loss shall not hinder our progress. अच्छा इस ट्रेलर पे एक चीज मैंने देखी. सब है सब जितने भी लाइक हार्वेंजर्स हो सकते सब है. लेकिन जितना काउंट करके देखा मैंने कि लाइक 11 हार्वेंजर्स है. सॉरी थे. उसके बाद एक गई तो 10. तो मैंने तो उधर भी कैलकुलेट करके देखा वो 10 है. लेकिन इसमें से आपको समझ में आ गया होगा जो समर वो जो मोना वाला क्वेस्ट का था. क्या नाम था उसका? क्या नाम है उसका? भूल गया. ये तो जुम्मा में किया था वो. आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम था उसका. स्कैरामुश. हाँ तो वो नहीं दिखा मुझे इस पूरे ट्रेलर के अंदर कहीं पर नहीं दिखा. Dottore, what of Scaramouche and the Gnosis from Inazuma? Conventional wisdom holds that divine knowledge cannot be rationally comprehended. After conquering the divine gaze, he will make his next move. It's time to end tonight's foolish theatrics. Right now, you have no captive audience. Let every worthy sacrifice be carved in ice. With this nation endure for all time. In the name of Her Majesty the Tsaritsa, we will seize authority from the gods.
peace. जो फर्स्ट कार्ड सीन पे Such is the gift from a Tsaritsa. Such is Her Majesty's benevolence. Now you rest in this coffin, encased in layer upon layer of ice. But Rosaline, I promise you, your final resting place will be the entirety of the old world. I must say, you're looking very young today, Doctor. You know very well that I do not take that as a compliment. So, where's the segment in the prime of his life, then? He's busy with a little experiment in blasphemy. Colin, time to head out on patrol. Okay, Master Tainari. What was that? मैंने जब पहली बार सुना था कि लाइक जेंशिन ना ये देखो जैसे सुमेल इज बेस्ड ऑन व्हिच कंट्री तो इधर ना मैंने सुना है बेस्ड ऑन साउथ एशिया तो इधर ना मेरे को एक सेकंड के लिए लगा था कि इंडिया का मार्केट लेने वाले हैं इस बार फिर मुझे पता चला कि नहीं ये लोग मतलब साउथ एशिया तो बोला है लेकिन कोई डेजर्ट कैसे हो सकता है यार डेजर्ट कैसे हो सकता है यार चाइना के अंदर थोड़ी ना डेजर्ट है the most in Germany Lewin on China and Inazuma on Edo period Japan on the other hand Sumer will be based on different South Asian and Mid Eastern influences अब ये कहाँ डेजर्ट कहाँ पड़ता है मिड ईस्टर्न एंड साउथ एशियन जगह पे हाँ वो बात लगी कि छोटे छोटे डेजर्ट्स लोगे तो ठीक है लेकिन वास्ट डेजर्ट कहाँ मिलेगा सबसे बड़ा डेजर्ट तो थार है इसके अलावा और कहाँ है ये वर्ड मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन इंडिया भी लेकिन साथ में नॉर्थ अफ्रीका हाँ हिंदी ये तो थोड़ा थोड़ा इंडियन कल्चर देखने को शायद से मिल सकता है नहीं तो ये मिलेगा अरे ठीक है चलो हो गया बहुत देखना आज के लिए इतना स्ट्रीम था मिलता हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम के साथ क्योंकि मैं और वो अभी अगर आके खोल दरवाजा खोल वरना दरवाजा तोड़ दूंगा तो मैं क्या करूँगा मैं तो स्ट्रीम तब नहीं कर सकता ना तो ठीक है मिलता हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम के साथ तो लिए टाटा बाय बाय एंड स्ट्रीम एंडिंग देख के जाना बहुत मेहनत लगी है मतलब हाँ मैंने कुछ किया है और कॉपीराइट अगर नहीं मिलेगा तो मस्त है और अगर लिख गया तो आई गेस मुझे कोई टेम्पलेट मिलेगा तो यार बाय बाय एवरीवन एक्सेंट हाँ बाय बाय एवरीवन